तो नमस्कार, हम लोग सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का टाइमलाइन देख लेते हैं। उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आएगा शेयर इशू चार्ट, फिर आएगा पावर ऑफ सेबी, प्रोस्पेक्टस इज़ नॉट नेसेसरी पॉइंट्स, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर, डीमैट फॉर्म, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट दैट इज कोला, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग prospectus with information memorandum, deemed prospectus, sign, section 34, section 35 that is criminal liability and civil liability, section 37 aggrieved person, section 36 inducing, section 38 fictitious name, section 39 allotment, return of allotment that is pass 3, then GDR, then private placement, then procedure and chart, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। यहाँ पर हम लोगों का प्रोस्पेक्टस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइमलाइन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चार्ट ऑफ शेयर इशू। शेयर इशू 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक इशू, राइट और बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पब्लिक इशू भी 3 प्रकार के होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? When company sell the shares to public on behalf of an existing shareholder like promoter। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट में आते हैं जो कि पावर ऑफ सेबी को बताता है। कंपनी को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी विच हैज़ अप्लाइड फॉर लिस्टिंग एंड अनलिस्टेड कंपनी। पहला भाग जो है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी विच हैज़ अप्लाइड फॉर लिस्टिंग फॉलो सेबी फॉर इशू और एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड फॉर ऑल द रेस्ट मैटर फॉलो CG's Companies Act 2013। Unlisted company on the other hand follow CG's Companies Act 2013 on all matters. Now starting with the section 26 matters to be stated in the prospectus. Prospectus will contain those matters as may be prescribed by SEBI. So basically the prescribed matter is statutory information. Prospectus shall make a declaration about the compliance of the provision of this act. And what is this act? Securities Contract Regulation Act 1956. Other thing is, no prospectus shall be issued unless delivered to the registrar for registration, a copy thereof signed by every person who is named there as a director or proposed director. Third, prospectus must be issued to public within 90 days of its delivery to ROC. Okay? And one most important point, prospectus is never issued by private company. It is only issued by public company before public issue. But even the public company will not issue prospectus in 2 cases. When issue is made to existing members or debenture holders, if company issues to public, same class of securities which are already listed at RSC. Okay? Now coming in section 27, that it talks about variation in terms of contract or objects mentioned in prospectus. इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले SR in GM पास करो। सेकंड, पब्लिश इन न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर 2 न्यूज़पेपर, दिस इज पास 1। एंड नाउ थर्ड स्टेप इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द सेक्शन 29 दैट सेज पब्लिक ऑफर मस्ट बी इन डीमैट फॉर्म। सेक्शन 30 प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या कंटेंट रहेगा? कोला रहेगा, कोला COLA, C for contents of its memorandum, O and L for objects and liabilities of members, A for amount of share capital. Let's move to the next section, that is section 33, abridged form of prospectus. It is a condensed form of main prospectus containing all important information but in concise manner. It is compulsory to be annexed with every application form and will bear same serial number of application form. Okay, एक और बार पढ़ते हैं। It is a condensed form of main prospectus containing all the information but in concise manner. It is compulsory to be annexed with the application form and will bear the same serial number of application form. However, it is not required to be issued to underwriters or promoters if they subscribe the securities. Any default will attract fine of 50,000 for each default. What is self prospectus? Self prospectus is such type of prospectus which will allow company to issue securities in several tranches for next 1 year without issuing the prospectus again. But company shall also file information memorandum in past 2
on new charges created, any change in the financial position 1 month before proposed issue. Okay, that's it. कि SEBI has prescribed that following classes of company can issue self prospectus. तो कौन कौन सा कंपनी है? NBFC, PFI, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी. इसको समराइज कर सकते हो नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. NPPL, NBFC, PFI, public sector company, listed entities, provided that they should have minimum net worth of 500 crore. Red herring prospectus under section 32 or information memorandum. It is an incomplete prospectus which does not contain number of securities to be issued, issue price. A copy of red herring prospectus shall be submitted to ROC at least 3 days prior to the opening of subscription. Any variation between the red herring prospectus and prospectus shall be highlighted in the prospectus, failing which it is a fraud under section 447. Again, red herring prospectus under section 32 or information memorandum. It is an incomplete prospectus which does not contain number of securities to be issued, issue price. A copy of red herring prospectus shall be submitted to ROC at least 3 days prior to the opening of subscription. Any variation between the red herring prospectus and prospectus shall be highlighted in the prospectus, failing which it's a fraud under section 447. अब बात करते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में. If company appoints an issuing house to comply all the legal formalities related to public issue. If company appoints an issuing house to comply all the legal formalities related to public issue, then such issuing house will issue shares to public on behalf of the company and shall comply all the legal formalities, appoint underwriters and also issue prospectus on behalf of the company. Such prospectus is called deemed prospectus, and it shall be signed by at least 2 directors if issuing house is company or by 50% partner if issuing house is a firm. This entire concept is called placing shares. So prospectus chapter का सबसे मजेदार आ गया है section 34 and section 35. Because of the misstatement of prospectus, 2 liability arise होते हैं, criminal liability under section 34 and civil liability under section 35. तो सबसे पहले इसको डिफरेंस चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में, फिर बात करेंगे सिविल लायबिलिटी के बारे में, फिर अगेन क्रिमिनल लायबिलिटी देन सिविल लायबिलिटी. ओके, लेट्स स्टार्ट. बिकॉज द मिसस्टेटमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस 2 liability arises. Criminal liability under section 34, civil liability under section 35. Mens rea is essential, mens rea may or may not be there. Civil liability is attracted if because the misstatement loss is caused to public. Fraud under section 447 attracted, damages will have to be paid to public to the loss, to the extent of loss. Person who has authorized issue of prospectus shall be liable. Person who has authorized issue of prospectus shall be liable. Also company promoter director shall be liable. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है सिविल लायबिलिटी का, कुछ कुछ एक्सेप्शन है क्रिमिनल लायबिलिटी के भी. तो क्रिमिनल लायबिलिटी का एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं. व्हेन मिस स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमटेरियल और till the time of the issue of the prospectus that person believed that whatever is mentioned in the prospectus are correct and whatever omissions was there it was necessary. Okay, exception of civil liability. When prospectus was issued without the knowledge of the director and when he became aware, he gave a public notice that it was issued without his consent. Number 2, when a person gives his consent to act as a director but withdrew it before the issue of the prospectus. Number 3, till the time of the issue of the prospectus that person believed that whatever is mentioned in the prospectus are correct and whatever omissions are made it was necessary. Summarizes up whole. Because of the misstatement of prospectus, 2 liability arises. Criminal liability under section 34, civil liability under section 35. Mens rea is essential, mens rea may or may not be there, but civil liability is attracted when because of the misstatement loss is caused to public. Fraud under 447 attracted, लेकिन यहाँ पर damages will have to be paid to public up to the extent of the loss. Person who has authorized the issue of the prospectus shall be liable. यहाँ पर भी person who has authorized the issue of the prospectus shall be liable, but also company promoter director shall be liable. Exceptions to the criminal liability under section 34 where misstatement or omission was immaterial, okay, till the time of the prospectus that person believed that whatever mentioned in the prospectus are correct and whatever omission was there it was necessary. But exceptions of civil liability when prospectus was issued without the knowledge of the director and when director became aware of it he gave a public notice that it was issued without his knowledge. Number 2, when a person gave his consent to act as a director but withdrew it before issue of the prospectus. Number 3, till the time of the issue of the prospectus that person believed that whatever is mentioned in the prospectus is correct and whatever omissions was there it was necessary. So if a person fraudulently
induces the person to invest money by making statement which is false, deceptive, misleading या deliberately conceals any facts। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है या फिर डिलीवरी कंसील्स एनी फैक्ट्स, उसको बता करके आप किसी और को इंड्यूस कर रहे हो कि तुम मनी को इन्वेस्ट कर दो, तो आप पे फ्रॉड अंडर 447 अट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 36। अब सेक्शन 37 क्या कहता है? एक्शन बाय एग्रीड पर्सन की सूट मे बी फाइल्ड बाय एग्रीड पर्सन। ओके। सेक्शन 38 क्या बोलता है? एनी पर्सन हु मेक्स एप्लीकेशन इन फिक्टिशियस नेम्स फॉर एक्वायरिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर 447। लेट्स समराइज दिस अप। सेक्शन 36 पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। यदि कोई आदमी फॉल्स, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग स्टेटमेंट से किसी और को बहका रहा है कि वो इन्वेस्ट करे मनी, तो वहाँ पर फ्रॉड अंडर 447 अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 37 क्या बोलता है? जो दुखी आत्मा है, जो एग्रीड पर्सन है, वो भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 38 क्या बोलता है? एनी पर्सन हु मेक्स एप्लीकेशन इन फिक्टिशियस नेम, एनी पर्सन हु मेक्स एप्लीकेशंस इन फिक्टिशियस नेम्स फॉर एक्वायरिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर 447। सो व्हाट इज अलॉटमेंट? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर टू टेक शेयर्स बाय द कंपनी। इसके 4 पॉइंट्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। Prohibition on allotment. Unless the minimum amount stated in the prospectus has been subscribed, no allotment shall be offered to public. Unless the minimum amount stated in the prospectus has been subscribed, no allotment shall be offered to public. यहाँ पर minimum amount क्या है? At least 90% of issued shares must be subscribed. Number 2, payment of amount. Amount payable on application shall not be less than 5% of the nominal value. Amount payable on application shall not be less than 5% of the nominal value or such other amount as may be specified by SEBI. SEBI क्या स्पेसिफाई किया है? 25% of IP value. Amount payable on the application shall not be less than 5% of the nominal value or such other amount as may be specified by SEBI, that is 25% of IP. Number 3, where no amount is so received within 30 days of the date of the issue of the prospectus, amount shall be returned within 15 days from the closure of issue, otherwise 15% per annum. ठीक है। where no amount is so received within 30 days of the date of the issue of the prospectus, amount shall be returned within 15 days from the closure of the issue, otherwise 15% per annum. और last, file with ROC, return of allotment of past 3. Summarize this up. सबसे पहले, unless the minimum amount stated in the prospectus has been subscribed, no allotment shall be offered to public. Amount payable on application shall not be less than 5% of the nominal value or such other amount as may be specified by SEBI, that is 25% of the IP. Where no amount is so received within 30 days of the date of the issue of the prospectus, amount shall be returned within 15 days from the closure of issue, otherwise 15% per annum. File with ROC, return of allotment. एक और बार, pump. Unless the minimum amount stated in the prospectus has been subscribed, no allotment shall be offered to public. Amount payable on application shall not be less than 5% of the in nominal value. याद रखना, 5% of the nominal value or such other amount as may be specified by SEBI, that is 25% of IP. Where no amount is so received within 30 days of the date of the issue of the prospectus or such other period as is specified by SEBI, amount shall be returned within such time and manner as may be prescribed, to 15 days from the closure of issue, otherwise 15%. और लास्ट है फाइल विद ROC, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो कंडीशन रिलेटेड टू अंडरराइटर कमीशन में 3 क्वेश्चन पूछना है, कैसे, कहाँ से, कितना। कैसे? ऑथराइज्ड इन कंपनी जो ये हुए, कहाँ से? प्रॉफिट से, नहीं तो प्रोसीड्स ऑफ इशू से, या फिर दोनों से। कितना रेट ऑफ कमीशन? याद रखना, डिवेंचर में 2.5% ऑफ द इशू प्राइस और स्पेसिफाइड इन द कंपनी आर्टिकल विच एवर इज लोअर, और शेयर के केस में 5% ऑफ इशू प्राइस और स्पेसिफाइड इन कंपनी जो है विच एवर इज लोअर। ठीक है। समराइज इज अप। कैसे, कहाँ, कितना। कैसे? ऑथराइज्ड ने ये हुए, कहाँ से? प्रोसीड्स या फिर प्रॉफिट्स, और कितना? रेट ऑफ कमीशन। डिवेंचर के केस में 2.5 और स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर, 5 और स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर। अब सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए 2 चीज़ करना पड़ेगा, एक इंट्रो भी साथ साथ देखते जाइए जिसका चार्ट है, और साथ साथ इसका थ्योरी भी देखते जाइए। सबसे पहले इंट्रो में देखिए, इंट्रो के नीचे लिखा हुआ स्पेसिफिक ऑफर आइडेंटिफाइड, BOD SH पास 3 सेंड पास 4 मेंटेन। इसको हम लोग पढ़ते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। इंट्रो अभी स्टार्ट हो रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट का। इट मीन्स ए स्पेसिफिक ऑफर गिवन टू द आइडेंटिफाइड पर्सन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी।
द पर्सन टू whom private placement shall be made identified by BOD and then approved by shareholders by passing SR in GM. Company shall send private placement offer to identified person in form number pass 4 and maintain the details of this identified person in register pass 5. अब टाइमलाइन देखिए, अब आता है मैक्सिमम में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 और 200 प्लस QIB और एम्प्लॉई को क्रॉस कर दिया, यानी QIB और एम्प्लॉई 200 को लिमिट में नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू whom प्राइवेट प्लेसमेंट इज मेड कैन नॉट एक्सीड 50 और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब दैट इज 200. द प्राइवेट प्लेसमेंट मेड टू QIBs एंड एम्प्लॉयज आर नॉट काउंटेड इन द अबव लिमिट ऑफ 200. अब यहाँ पर बीच का आते हैं. ओके, पहले हम लोग इंट्रो किए, फिर मैक्सिमम तक पहुँचे, फिर आएंगे बीच में, फिर हम लोग कांट यूज़ में जाएंगे और फिर एंड हो जाएगा. तो बीच में आ चुके हैं एल एन टी का मतलब एल से लिमिट क्रॉस. अगर लिमिट क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, न्यू प्रोस्पेक्टस हम लोग कब ला सकते हैं, टाइम, क्या टाइमिंग है, मतलब कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शन तो होगा ही. और फिर नो कार. ठीक है, सबसे पहले एल लिमिट क्रॉस करेगा तो क्या, इफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज in an financial year has been made to more than 200%, then it shall be deemed to be public issue and regulation related to public issue shall have to be complied. ठीक है, लिमिट क्रॉस एक और बार पढ़ते हैं. इफ प्राइवेट प्लेसमेंट इन एन फाइनेंशियल ईयर has been made to more than 200%, then it shall be deemed to public issue and regulation related to public issue shall have to be complied. And new private placement is allowed unless allotment of previous private placement has been completed or abandoned. न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट तभी अलाउ है जब जो प्रीवियस प्राइवेट प्लेसमेंट था उसका अलॉटमेंट हम लोग या तो कर चुके हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, या तो अबेंडन कर दिए हैं. ओके, यही कह रहा है न्यू. तो टी फॉर टाइम का क्या रिस्ट्रिक्शन है. अलॉटमेंट शैल बी मेड विद इन 60 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द मनी, फेलिंग विच इंटायर मनी शैल बी रिफंडेड विद इन नेक्स्ट 15 days. 60 दिन के अंदर, 60 दिन कहाँ से, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी से 60 दिन तक आपको अलॉटमेंट कर देना है. और अगर फेल करोगे आप इसको करने में तो 15 दिन के अंदर आपको इंटायर अमाउंट रिफंड कर देना पड़ेगा, नहीं तो 12% का इंटरेस्ट लगेगा. कहाँ से, जब 60 डे एक्सपायर होगा उस दिन से. ठीक है, एक और बार पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. अलॉटमेंट शैल बी मेड विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, फेलिंग विच इंटायर अमाउंट शैल बी रिफंडेड विद इन नेक्स्ट 15 days, अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम. एल एंड टी खत्म हो गया. अब यहाँ था नो कार. नो मतलब नो कैश इज अलाउड, नो एडवर्टाइजमेंट इज अलाउड, नो रिनाउंसिएशन इज अलाउड. ठीक है, अब आता है कांट यूज़ का, लेकिन इसके ऊपर एक्सेप्शन लिखे हैं, रिफंड और एडजस्टमेंट टुवर्ड अलॉटमेंट. पढ़ते हैं इसको. कंपनी कैन नॉट यूज द प्रोसीड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. कंपनी कैन नॉट यूज द proceeds of private placement unless both allotment is made and form of allotment is submitted to ROC. Company cannot use the proceeds of private placement. Company cannot use the proceeds of private placement unless both allotment is made and form of allotment is submitted to ROC. Except two cases. Adjustment towards allotment, refund. ठीक है, अब हम लोग आए हैं अंत में. प्राइवेट प्लेसमेंट का टाइमलाइन का अंत हो रहा है. यहाँ पर क्या है अंत में आपको दो चीज़ मिलेगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और कॉन्ट्रावेंशन. तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म नंबर पास 3 कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ अलॉटी, अमाउंट रिसीव्ड आर सबमिटेड टू ROC विद इन 15 days ऑफ अलॉटमेंट. एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग विल अट्रैक्ट पेनल्टी ऑन कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर 1000 पर डे बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख. पेनल्टी ऑन कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर 1000 पर डे बट मैक्सिमम 25 लाख. एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42 विल अट्रैक्ट penalty to company, promoter, director, amount received or 2 crore, whichever is lower. ओके, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 42 का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो वो एक पेनल्टी अट्रैक्ट करेगा. और पेनल्टी किस पे होगा, कंपनी पे, प्रमोटर पे, डायरेक्टर पे, CPD पे.